Assalamu alaikum. In today's class, we will discuss factors affecting second language acquisition. How these factors affect the language learning and language acquisition process. Introduction. It is quite observed that some learners learn a new language more quickly than others because they are successful by virtue of their strong determination, hard work, and persistence. Sometimes one learner has more capability, God-gifted capabilities to learn a language, while other has not. Sometimes, sometimes, sometimes we are not capable enough to learn a language as much or as early or as in progress or as in a large quantity as other peoples can do. Sometimes we are less concerning. Sometimes we have less concernings related to learning a language while other has more. So we will discuss in our today lecture here some other learners are not very successful in learning a new language, and it is obvious that there are some crucial factors influencing success, which are mostly beyond the control of the learners. We can do nothing, or a learner can do nothing just to improve his or her learning factors. These factors can roughly be categorized as individual, internal factors, external factors, and lastly as affective factors. And we can divide the factors affecting the social language or second language acquisition. We has three categories. First one internal factors, second one external factors, and third one affective factors. What are the individual factors? First one, individual factors. We have 6 types of individual factors. First one, age. Second one, personality. And second one, the third one, motivations. And the fourth one, experience. And fifth one, cognition. And the sixth one, native language. And external factors, we have 5 factors: curriculum, instructions, and third one, culture and status, and fourth one, motivation, and fifth one, access to native speaker. And in affective factors, and we will learn 5 different factors. First one, self-esteem, and second one, inhibition, and third one, risk taking, sorry, and fourth one, anxiety, and fifth one, empathy. So in the first stage, we are here to discuss the first one. The age of the learners influence the second language acquisition. Children having strong literacy skill or in their own language seem to be in a better position to acquire a new language in a more effective way. जिन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं फर्स्ट लैंग्वेज के हवाले से, वो सेकंड लैंग्वेज को आसानी समझ लेते हैं. Very motivated, and older learners can do it, but usually they should try hard to become a native like speakers. Sometimes the experienced learners can obtain a title of like native speaker learner, but it is very difficult to get that type of things. It means it is very necessary for learning things. It has been hypothesized that there is a critical period in second language, just like there is for first language acquisition. There is some limitations while learning anything, as we have in first language or as well as we have second language. Language learning that occur after the end of CP may not be based on innate or inborn structures, but rather depend on more general learning abilities, and innate capabilities are much more effective for long language learning. Simply we can say our critical period, CP means the critical period, may not be based on the innate. Sometimes we
we have or we learn more critical aspects that is not born, or that is not adopted by a first language acquisition. The critical periods ends somewhere around the puberty. Sometimes we can say that learning is totally dependent on the situation where we are, or sometimes we become critical by our first language, but sometimes we adopt this critical nature after reading a second language. Effect of age on rate of second language learning. Adults are superior to children in the rate of acquisition. Older children learn more rapidly than younger children, or it is totally opposite to the concepts of first language. In first language, the children learn the things more quickly rather than the adults ones. Or if Oh, so sorry, it's the slides was skipped. Oh, okay, I will discuss it later in the at the last part. Second part is that personality. Inverted or anxious learner usually perform slower progress, especially in the development of oral skills. They are less likely to take opportunity to speak. More outgoing students will not worry about the inevitability of making mistakes. They do not care about taking risk. They get more chance to do much more practice in the language time or the learning process. Sometimes we can say that if you take a risk, that might be possible that you will be capable enough to learn a language. If you do not try to speak a word, how can you get other words? If we make mistakes, definitely it will be a time when we are capable enough to resolve and solve that mistakes. It's mean if we mentally prepare, or if we have courage enough to take risk, or to courage enough to speak a word, definitely we will learn quickly rather than the person who is not capable enough to take risk. Experiences, and the third part is experience. Learners who have already developed general knowledge and experience are in a stronger position to develop a new language than those who have not. जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस होता है समटाइम वो भी एक अच्छे लर्नर बन जाते हैं, और वो सेकंड लैंग्वेज को अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर लेते हैं. मिसाल के तौर पर अगर लर्नर हु हैज़ बीन 2 or 3 foreign countries and exposed to different culture build a stronger ground for learning an extra language than those learners who have not had such an experience. वो लोग जो आउट कंट्रीज में जाते हैं, विजिट के लिए जाते हैं या किसी और पर्पस के लिए जाते हैं, and they learn language very quickly. Even they are not belong to the second language cultures, but they try their best to adopt that cultures in very few days, in within a month, and within a years they are capable enough to speak and write every language where they are, or where they are in the situations. But if a person does not go outside and he stays in his country, so it's not possible for his or for him or for her to take or to learn a language of second language learning. अगर जब वो अपने ही मुल्क में रहेगा, दूसरी ज़ुबान नहीं सीखने की कोशिश करेगा, जब दूसरे मुल्कों से इंट्रैक्शंस नहीं होगी लोगों से, तो उसके पास वो बोलने की दिलचस्पी पैदा नहीं होगी. इट इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग टू टेक और टू हैव एक्सपीरियंस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. After that, we have motivations. Motivations, it plays a vital role to learn any language. Or motivation shows itself when you want to do something, an internal desire to perform a particular task. But कुछ लोगों को language learning करने की बड़ी दिलचस्पी होती है. वो they are very motivated to learn any aspects of the universe, or even they are very keen observative. Even we have a lot of people that are capable enough to speak like any native people. But just it's we can say that it's the outcome that they are very motivated, or they were very motivated once. और कभी वो बड़े दिल आपके लिए बड़े keen observative हुआ करते थे, बड़े इश्तियाक से चीज़ों को लेते थे, and people do certain activities because they give them play or develop a certain skill, or they are morally the right thing to do. But somehow motivations is when somebody else or something tries to make you do something. ये एक ऐसी काबिलियत होती है जो इंसान को internally
कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। और intrinsically motivated students are bound to do much better in classroom activities since they are willing and eager to learn। और जब आप रजामंदी से कोई काम करते हैं, आपका दिल चाह रहा होता है कि आप करो, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर लेते हो आसानी से, बनिस्बत उन लोगों के जो इसके ऊपर काम करना बिल्कुल नहीं चाहते। Okay, cognition. Generally speaking, apparently students with greater cognitive abilities make a faster progress. Or as I told you in our previous slide, or I think in the second slides, that God-gifted qualities and the inborn qualities make a person more vigilant rather than to the person that he tries to be a vigilant. Some Chomskyan linguists suppose that there is a specific innate language learning ability which is believed to be stronger in some students than in others। और कुछ बंदों के पास बहुत ज़्यादा ये फीचर्स होती हैं, दूसरों के पास नहीं होती। तो लिहाजा ये इनबोर्न कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं, ये भी आपको बहुत सपोर्ट करती हैं। वी कैन से दैट गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ जो होती हैं। After that, we have second types of factors, that is that are external factors, and first one curriculum, second one instructions, and third one culture and status, and fourth one motivation, and fifth one access to native speakers. Curriculum. Actually, it's a design, theoretical framework, aims, goals, and objectives that are related to subject matter, and subject matter is the matter of evaluation, and evaluation is the matter of learning activities, and learning activities is come from the goals and objectives and aims. Or these are the basic things that curriculum must have. Particular for the English second language learners students, it is essential that the totality of their educational experience should be suitable to their needs. Or if the curriculum it does not make or does not require or does not require the fulfillment of the syllabus, so that it's useless for the students. If learners are entirely submerged into a mainstream program without having any additional assistance, then language learning is less likely to occur। और अगर हम किसी तालिब इल्म को उसकी बेसिक बताए बगैर किसी बड़े प्रोग्राम में छलांग लगवा देंगे, तो वो बच्चा उसके ऊपर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो लिहाजा करिकुलम की जो बेस है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, इट मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी अर्लियर steps, or very first or primary steps, that may help a student to learn that specified course easily. After that, instruction is very much important, or very clearly if language learners are exposed to appropriate and effective learning opportunities in their classroom, they will make faster progress। जो instructed person होता है वो बड़ा ही matter करता है। it is totally the matter of your instructions, how and how they are implemented over you peoples। आपको वो कैसे हिदायत की जा रही है, अगर वो हिदायतें आपको ठीक नहीं की जा रही, तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। Intervention and academic intervention is a strategy used to teach a new skills, build fluency in a skill, or encourage a child to apply an existing skills to a new situation or a setting. An intervention can be thought of as a set of actions that make taken have demonstrated ability to change a fixed educational trajectory। or sometimes we can say that अब अगर आप कोई नई इन्वेंशंस के तरीके से, एक नई अप्रोच के तरीके से कोई चीज़ इंस्ट्रक्ट करते हैं जो लोगों के दिल में या स्टूडेंट्स के दिल में एक इंटरेस्ट पैदा कर देती है, तो शायद वो आपको एक फ्लुएंसी या एक स्किल दे पाएगी। और अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस ही ठीक नहीं दी जा रही, तो दैट मे लॉस इट्स इवन के पोजीशन ऑफ द लर्निंग इन्वायरमेंट। After that we have culture and status। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए और कल्चर का और स्टेटस का होना बहुत ज़रूरी है। There is some evidence that students under the condition in which their mother culture has a lower status than the target language culture that they are learning will make a slower progress। अगर आपका स्टेटस बहुत लोअर है, आप कह लें कि अपर लोअर एंड एलीट क्लास की हम बात करते हैं, अगर लोअर क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली दे हैव मोर
problem to learn a second language while the upper class or elite class, because the environment in their home. Elite class, all the students belonging to elite class has or have more capability to learn any language, because all the peoples belonging to upper class, they used women mostly they used second languages like English, the most prominent language as that considered as second language acquisition. जब घरों में माहौल कुछ ऐसा होता है, अपर क्लीट क्लास के जो लोग होते हैं अमूमन वो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमारी फर्स्ट लैंग्वेज अगर हम इफ़ वी टेक अ फर्स्ट लैंग्वेज एज एन उर्दू, बट दैट्स एक्चुअली जो नहीं है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे कि पंजाबी है लेकिन हम उर्दू कंसिडर करते हैं, सपोज अगर उर्दू ही है, तो जिन लोगों की सोसाइटीज़ का ताल्लुक अच्छी सोसाइटी से है या जिनका ताल्लुक एक स्टेटस के साथ के वेरी करता है, अपर क्लास में हैं या एलीट क्लास में आप चले जाते हैं, और तो उन लोगों के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं, क्योंकि उनके घरों में ये इन्वायरमेंट चल रहा होता है। और जिन लोगों के बच्चे आप कह लें कि जो पुअर सोसाइटी से बिलोंग रखते हैं या स्लो या आप कह लें कि लोअर सोसाइटी से बिलोंग रखते हैं, लोअर स्टार्टम से बिलोंग रखते हैं, उनकी प्रोग्रेस बहुत कम होती है। सोशल फैक्टर्स कैन अफेक्ट मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस। और ये जो सोसाइटी के जो स्टेटस होते हैं ये भी बड़े मैटर करते हैं। एक के पास ज़रूरियात ज़िंदगी की सभी चीज़ें हैं, दूसरे के पास नहीं है। जब वो है तो वो आसानी से लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर या किसी भी एस्पेक्ट को लर्निंग के लिए एक अच्छा जोर आप कह लें कि अच्छा इम्प्लीमेंटेशन दे सकता है उसके ऊपर, लेकिन जब एक नीड ही पूरी नहीं हो रही तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, मेरे ख्याल में उसमें परेशान रहेगा, इस तरह भी का शिकार रहेगा, और ये चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं बच्चों को। Children just like adults are quite sensitive to social dynamic and power relationship। अगर बच्चों को वो ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिलती और वो आसाइशें नहीं मिलती जो उसके कुलीग को मिल रही हैं, तो बच्चे इन चीज़ों को बहुत नोट करते हैं और फिर वहाँ पर वो अपड्यूरेट हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं और वो परफॉर्म नहीं करते बिल्कुल भी। फिर है जी एक्सेस टू नेटिव स्पीकर्स। कैसे? सिंस नेटिव स्पीकर्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ लिंग्विस्टिक मॉडल एंड सिंस दे कैन प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक फॉर द teaching, learning, or it is very advantageous to have the opportunity to interact with the native speaker not only in the classroom setting but also outside of it। और अगर आपको किसी नेटिव स्पीकर के साथ एक्सेस मिल जाती है तो that will may help you a lot of you people to give a success, so that will help you to learn a second language, because the native speaker is in the process or is in the contact to talk to you or to teach you or some words of that language, or that will help you to understand the accents and pronunciations and some types of the cultures as well. It is obvious that those second language learners having no extensive access to native speaker of the target language are supposed to make slower progress, especially in the oral and aspects of language acquisition। और जब वो जुबानी बात करना चाह रहे होते हैं, that they have no or that they have no parameter, that they have no measurable things to express, and that I think that they have no words to express even the single words, because they have no all the capabilities and all the facilities and even all the features of second language acquisition as the person has who has the access to the native speaker। Third one, the affecting factors। फर्स्ट वन सेल्फ एस्टीम है, इनहिबिशंस है, और रिस्क टेकिंग है, एंजाइटी है, एंड एम्पैथी है। एंड लेट्स मूव ऑन द सेल्फ एस्टीम। द सेल्फ एस्टीम रेफर टू अ पर्सनल evaluation and judgment of worthiness that is expressed in the individual's attitude toward him or herself or his or her capabilities। कि अगर हम देखते हैं कि आपकी जजमेंट कितनी एक्सप्रेस होती है अपनी ज़ात के तौर पर, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है और उसकी एवेल्यूशन भी आप अच्छी कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये भी आपको हेल्प करेगा अपनी लैंग्वेज लर्निंग को। लेकिन जो लो मोटिवेशंस हैं, लो सेल्फ एस्टीम्स हैं, डिसेबिलिटी, एंजाइटी कैन लीड टू अ रेज इन एन अफेक्टिव फिल्टर and form a mental block that hinder comprehensible input from being employed for acquisition। और ये जो परेशानियाँ होती हैं या आप कह लें कि डिसेबिलिटीज़ होती हैं या सेल्फ एस्टीम की कमियाँ होती हैं, ये चीज़ें इंसान को या किसी बच्चे को या किसी लर्नर को सेकंड लैंग्वेज की तरफ बढ़ने से रोकती हैं। अगर आप सेल्फ एस्टीम्स हैं, आपकी पर्सनल वैल्यूएशन और जजमेंट वर्दी है,
और जो आप इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज एज वेल। इनहिबिशंस क्या होती हैं? When he or she attempts to defend or protect his or her self-image, if the learner considers the mistake and he or she makes in the second language as a threat to his or her emotional well-being and self-perceptions, then acquisition will not take place or will occur much more slowly. और अगर आप अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में या सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर कोई एरर कर दिया है, कोई मिस्टेक कर दी है, तो उसे आप समझना चाह रहे हैं और लेकिन समझने के लिए आप अपनी ही गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर ये भी आपकी लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम पैदा कर देगी। तो लिहाजा ज़रूरी है, अगर गलती अब तो कोशिश करें गलत बोले ही ना, अगर आपको लफ्ज़ का पता नहीं है तो साफ इनकार कर दें, आई डोंट नो, आई विल एंड वी विल डिस्कस इट एंड वी विल डिस्कस अबाउट लेटर। आप कुछ ऐसा कह देंगे, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सर्च दैट स्पेसिफिक वर्ड एंड after searching put the information toward the learners and toward the your colleague as well. बट एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, तो फिर हमें ये बहुत से वर्ड्स पीछे ले जाती है। Risk taking, as I informed you earlier, one of the characteristics that has been found to exist in good language learner is that willingness to guess. और अगर वो रिस्क लेते हैं, ये नहीं डरते कि टीचर क्या कहेगा, क्लास में पता नहीं रिस्पेक्ट रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर मैंने गलत बोल दिया तो फिर क्या बनेगा, अगर सही ना निकला आंसर तो फिर क्या बनेगा। अगर इफ़ ही और शी डजंट हैव इनफ करेज टू टेक अ रिस्क, तो डेफिनेटली उसे आंसर आता भी होगा तो वो नहीं बोलेगा उसके ऊपर, वो उसके ऊपर बात नहीं कर पाएगा। जब वो बात नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर उसकी लर्निंग प्रोसेस रह जाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से रह जाएगा। वो चीज़ें जो प्रोड्यूस करना चाह रहा है, करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, वो भी प्रोड्यूस करने से वो रह जाएगा। तो लिहाजा रिस्क टेकिंग इज़ वेरी मच इफेक्टिव। एंड द फोर्थ वन, एंग्जाइटी। और ये आपकी जो इस तरह भी होती है, आप कह लीजिए मैं आपकी बेचैनी जो होती है, और ये अमूमन आपको अनईज कर देती है और आपको सेल्फ डाउट कर देती है, आपके ऊपर फियर क्रिएट कर देती है। Anxiety is associated with the feeling of uneasiness, self-doubt, worry or fear that a person feels under certain circumstances। और ये आपको आप कह लें कि ये एंग्जाइटी, ये वो चीज़ है, ये वो अनईजीनेस है, ये वो फीलिंग्स हैं, ये वो परेशानी और वो खौफ है जो किसी एक माहौल के अंदर आपको पैदा हो सकता है। A threatening environment does not promote language acquisition। और जहाँ पर खौफ पैदा होता हो, जहाँ पर एंग्जाइटी पैदा होती हो, in that situation we can never ever learn a language and we can never ever make a people capable enough to learn or get a single word of any language. Either it is a first language or it is a second language acquisition. So it is necessary for a learner, it is necessary for instructor as well to make a comfortable environment for a student to get the best work. Factors such as an emphasis on a competition between students or forcing students to produce in the second language before they are ready can cause anxiety। और समटाइम ऐसा भी होता है कि बच्चा इस काबिलियत में नहीं होता, लेकिन उसको कंपटीशन रख दिया जाता है कि तुम उसके साथ कम्पीट करोगे या तुम्हारा मुकाबला उससे है, तो तब ऐसी मामलात में एंग्जाइटी पैदा हो जाती है सुपीरियर और जूनियर। And the last one that we have, empathy. Empathy refer to an individual's ability to put him or herself in the other's shoes. So when a learner is acquiring a second language, he or she is also acquiring in a sense a new personality। जब वो दूसरे, आप कह लें कि किस जुबान को सीख रहा है, वो जिस जुबान को नहीं सीख रहा है, वो दूसरे पर्सन की कैटेगरी, उसके कल्चर, उसकी ज़ात, उसके हर एस्पेक्ट्स को देख चल रहा है। A new personality and a new culture, it is essential in the language acquisition process to open yourself to new cultural experience and adopt these experiences as your own। और अगर तुम rigid से हो, stubborn हो, dull minded हो या आप congested minded हो, you do not want to learn or acquire any other culture, तो it is not easy for you to learn a second language। और अगर आप ये समझते हो कि मैं इसे समझ लूँगा, पढ़ लूँगा, तो फिर ज़रूरी है कि आपको वो कल्चर भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप वो कल्चर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी।
Being successful in second language acquisition depends on many factors. Age and motivation factors are among the most important ones. In studies, it has been found that if a learner has competency in his or her own language, he or she is more advantageous than those who lacks competency in his first language. As to motivation, it has been revealed that motivated students are more successful in second language acquisition than those who are demotivated. Also, the psychological aspects play in gaining an extra language control or cannot be denied. So move on. Okay, students, if you have any question, you can make or you can tag me in your discussions either on the easy class or on your WhatsApp groups. Thank you.